पारुल मैं साइलेंट में एंड वीडियो ऑफ में होंगी बिकॉज आई एम रीचिंग द टेम्पल. पारुल सुनाई दे रहा है? Parul, I think, is frozen, Brinda. Oh, Parul seems frozen. Yeah, now she's come. Don't worry. Yeah. So I'll be on mute and I'll have switched off video. I'm available. Done. तूने वही किया जो मैंने किया. क्या? कुशन रख लिया पीछे. Great minds think alike. Parul, I'll also make you host so it becomes easier for you. Yeah. Wow. अभी जो लोग आए उन्हें ले लें वृंदा जी अंदर. हाँ, एक बार मैं आपको होस्ट बना देती हूँ फिर लाइव. ठीक है. I'm making you host because it becomes easier. अगर मेरा ना यहाँ कैसा है, I don't know. We are in a kind of religious place. Connection कैसा है मुझे नहीं पता. Don't worry. Parul is the best host. Yeah, leave her. She can run the whole thing single-handedly. Leave her. Absolutely. Ma'am, you should come to this place. It's really nice. You'd really like it. Yeah, we'll do that. This place called Karpare, who's our family deity. I told you, no? You should see the place, ma'am. I'll show it to you sometime. Take pictures and send it to you. Take some It's just pictures. so good. Yeah, I will. You'll really like it. Send out another message, please. I did, ma'am. I sent another message at 4. Okay. Hello, ma. Good Hi, evening. Rashmi. Rashmi is all ready. Hello. Hello, Rashmi, all ready to go to the temple or doing the puja? शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं अभी. Hello. Yes, Hi, sir. Rashmi. Can you hear us? Now I can hear you. Looking gorgeous in a sari, all ready? Yeah, I've gone for a puja. Very nice. थोड़ी देर पहले आई. Thank you so much for coming in. I think I would admire everybody who comes in here because today is a very auspicious day, but it's nice also to talk on auspicious days and break all the barriers and come together as a family so that. Hi, Rama. I think everybody should keep their videos open, and as long as you're not talking to your family members, you can also keep your audios open. So that hi Hi to Ma, how are everybody you? and happy Dasara. Hi Shamik, how are you? I'm fine, ma'am. Good evening. I'm fine. Good evening. Good evening. Amazing Durga Puja you had, and I saw you And come dancing. and say good. Yeah, They very come nice. and say. Come. Say happy Dasara. Come and come fast. 2 मिनट और हम वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन. हाय श्वेता. हेलो. Hi, Hello, how are you all? Hello. Hello to Shweta's everybody. always on And the happy move. Dasara to all. थैंक यू मैम. थैंक यू. हैप्पी दशहरा. Thank you. Rekha Mohira. Happy Dasara. Jore. हैप्पी दशहरा. Happy Dasara. Say loudly. Happy Dasara, Parlanti. She Happy said it, Dasara, Hema. I could Rekha hear Ma. it. Hema, she's very clear. She's very clear. And very nice. Thank you so much. God bless you. God bless you. Welcome. You're not drinking coffee?
Hello. Good evening, Mami ji. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के शनिवार के सेशन में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं पारुल। आज मेरे साथ समीक्षा किसी वजह से नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है शायद वो जल्दी हमें किसी भी समय ज्वाइन कर सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर अवेयरनेस मंथ चल रहा है डाउन सिंड्रोम के लिए, वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है। हम भी इंडिया में ऐसा सब बहुत कुछ है जो अपनी अपनी दायरे में रहकर कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बहुत से प्रोग्राम आप देख रहे होंगे नेट पर भी, और हमारे सेशंस में भी, कि हम अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आपके लिए आ रहे हैं। क्यों ये अवेयरनेस है और क्यों इसकी अवेयरनेस की जरूरत पड़ी, और डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया इतना जोर क्यों देता है लोगों के एक साथ मिलकर चलने पर, एक साथ मिलकर बात करने पर, फैमिलीज के एक साथ मिलकर बात करने पर। ऐसा क्या है जो इस दुनिया में थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स हमें नहीं दे सकते हैं? वो कौन सी चीज है जो हमारा एक दूसरे का साथ ही हमें दे सकता है? आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। वो कौन सा सहारा है जिसकी वजह से आज आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने बच्चों के साथ खासकर बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं या अच्छा महसूस करते हैं? वो क्या था जिसकी वजह से आप DSFI से जुड़े भी, फिर हमसफर से जुड़े? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नए हमारे साथ पेरेंट्स ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको नहीं मालूम है कि हमसफर कैसे शुरू हुआ है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, अच्छा, Parul. गर्दन हिलाते रहिए क्योंकि ऐसा लगता है मैं फ्रोजन हो गई हूँ। आप कभी फ्रोजन होते ही नहीं है। चलो। जी शुक्रिया। तो बहुत सारा हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है कि हमसफर कैसे शुरू हुआ था, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया कैसे शुरू हुआ था, और कैसे कहाँ से हम कहाँ पहुंचे हैं। इस पर हम बात करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 8 सालों से हम अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसमें हमारे तरह तरह के देश विदेश से इतने अच्छे अच्छे लर्नेड स्पीकर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, अलग अलग रीजन के पेरेंट्स से आप मिलते हैं। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? इसके लिए हम सब लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ये सब चीजें लेकर आते हैं, और आपका कोई सुझाव है? आप इसमें क्या चाहते हैं? आपने जो देखा, आपने जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस में देखा या हमारे हमसफर में देखा, उसमें आपका कोई सुझाव है? आप कुछ चेंज चाहते हैं? आपका मन है कुछ और भी आपको चाहिए, कुछ और ऐसी जरूरतें हैं जो हम आपकी पूरी कर सकते हैं? उस पर भी आज हम आप बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा रामाचंद्रन, हमारी अपनी रेखा माँ। रेखा माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। हमें मालूम है आप बहुत बिजी हैं और फैमिली की एक तरीके से अपने किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे लिए आई समय निकाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Parul. I mean, it's not about time, it's about just being with my family. And today is Vijayadashmi. And I was just reading about the advantages of Vijayadashmi. It's about letting go and moving into the future. What do we plan? What do we want? What do we, achieve through a connectivity that is the force behind Hamsafar, which means that our family stays together, we work together, and we are humble all the time. We just want our people to be happy. But how do we achieve happiness if we don't walk together? We need to hold hands. We need to share. We need to be there as a caring family, which is looking after the others as much as I look after myself, and being there 24/7. So I want you all to understand that it is not what I have done or what we created. It's about how we all got together. And 8 years ago, we suddenly realized that we were a family, and families stay together through thick and thin. It's important. It's not that one day in the year that we come together or the conferences. It's about being connected right through life. And I want everyone to come up with suggestions on how the Humsafar family can be more evolved, and how parents of the next generation can learn from us. What is it that we are going to offer them on a platter? How is it that we're making lives much smoother for everybody? And how, to enjoy it. For me, it is like Parul says, even today, as I'm sitting here, you enjoy the moment you are in. Don't think about
I have this or I don't have this. Don't go into stress calls. These stress calls will pull you down like mad. You have a stress, call us. Anybody who has a stress, call somebody and talk. The fact that you don't talk and you don't open up makes you feel miserable that I'm alone. No one is alone. We don't want you to be alone. That loneliness kills you. It pulls you down so badly. You think the reason that Humsafar was formed was only for one reason. We all have a common pain. And that pain will last right through our lives. It's not being erased. I'm not even asking you to erase it. I'm saying even living with it, we can do it happily. Yes, Parul, we need to move on. We need to open up the box and ask everyone for their suggestions on how we could be more into their lives without interfering, without being there, but being there on the sidelines and being very helpful to each other. From every state, I want people to open up and say, what can you offer us? What can we do for your state? How do we make the program more universal and more accepting? बिल्कुल रेखा माँ। और आज का जो सेशन है उसमें अभी से मैं आप सबके हवाले आज का सेशन करती हूँ। इसमें आज मैं होस्ट नहीं हूँ, आप सब लोग होस्ट हैं और रेखा माँ हमारे सामने है। उनसे हम हर तरह का वो सवाल जो आज तक के लिए कॉन्फ्रेंसेस के लिए या हमारे हमसफर ग्रुप के लिए या DSFI के लिए आपके मन में है, तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। आप सब होस्ट हैं, बस म्यूट का ये ध्यान रखिएगा कि पीछे की अगर आपके यहाँ से आवाज़ आ रही हो तब आप अपने आप को म्यूट रखें। आप अपने कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है या कोई भी एक्सपीरियंसेस है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप और हमसे क्या चाहते हैं, हम अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं कि हम आपको और अच्छे से सर्व कर सकें। सामिक, I'll go first. Yes. Probably the only man in No, the no, no, house. no. We have a lot No, of no. men. Okay, he hasn't Okay, shown his okay. face. It's Gamini from. He's Yeah. come from Sri Lanka, and he's on my on the. Yes, we have men. Okay. But you're a bold man, But so we want you to go ahead. Yes. so see, the IIDAC is mainly for the parents by the parents as an underlying statement, right? So why we can have experienced parents very impromptu share their experiences of right from the beginning till whatever age the person has, and then the new parents also share the hardship that they are undergoing right now. It should be a kind of an on day one icebreaker sessions, which will like open up people knowing each other more informally, more you know I mean, just sharing experiences and making it a little more impromptu so that people just without any inhibition comes up and says what they're going through. That's exactly what we want today, Shamik. The reason we want to break all those ices. See, the problem is many people are very withhold their feelings. They withhold information. Now, if I don't know what is your form of irritation or your form of issues, how can I solve it? Unless I know, like every minute of the day, we get calls about healthcare. But I'm saying there's something deeper than that. It's about you. I want you to be relaxed because I always tell parents, unless you are in a stress-free atmosphere, your child is not picking up the vibes. A child is a reflection of the parent. He is only watching. If the parents are laughing through the day and happy through the day, you will never have a child who is filled with stress, because the child looks and says, okay, they're laughing for no reason at all. Let's join that. And there's reason to have fun in families. We've all been through stressful situations, but we always looked for a companion who we could talk to. Create that companionship from now, open up everywhere and tell us, Ma, I have this issue, whether it is private, personal, anything. Open it up, because unless you tell us, we don't know. Am I right, Shamik? Absolutely. And then, having an outreach in the states, maybe the government hospital, the local hospital, over a period of time, so that new parents are completely clueless where to go, what to do. Right from the birth, when they get the information, they don't know what to do. Like I was first 6-8 months till I, got to attend the IIDAC in Raipur, I was absolutely clueless.
running here, there, and they don't know how to go about it and what to do. But then coming to an IIDSC, we got to see the power and the capability of our children, which normally is not showcased in every scheme. But IIDSC is a platform which gives you that confidence, that thought process that yes, everyone is capable and more than capable than any neurotypical child. So this is what I want everybody all over the country to do. Propagate, spread the information that IIDSC is a platform. It is not going to be 100 families anymore. We're extending it to 250 families. We'll go up to 1,000 families, but we want you to be there and join hands with us. Because unless we become one of the largest families, I'm honestly telling you, sometimes I feel you're more my family than my family is. Because some of the things that are very personal, I can talk to people like you in the Humsafar family rather than addressing it because they don't understand. They would say, why is she exaggerating the situation? Her child talks, her child walks. But there is that deep rooted pain that only we will understand, that we can connect with each other. And that continues all the time. But I want you to tell the next generation people, like what we did now in Kolkata was, Shamik, that we took 50% was below 10 years and 50% were adults. So we had a beautiful sharing platform. Now I'm saying for the next conference, from now you start doing the propaganda. Do the propaganda. Tell them you must come. Don't worry about how you come. We will support you. If the states are supporting and the state sends us information that so many people need so much support, we will raise the funds, but please come. We want more than 250 families for the next conference so we can make it like the biggest, largest fat Indian wedding that I love doing, because I love my functions, which are like the biggest weddings, okay, and where we are just fun and laughter, and there's nothing. I don't even think we can take back any message from our conferences except that we had fun. Am I right? We had so much fun in the conference that we attended every time. Rashmi, can you open up about the conferences? You've attended all of them. Yes, Ma, Sari, all the conferences I have been fortunate to attend, and I thoroughly enjoy and still want to enjoy for the coming years also. And I will recommend every parent to attend this. Definitely, you get to see a new world. You get to meet so many people from all over India. You get to see so many children, and we are so happy at the end of the conference. So वो एक साल के लिए पूरा मिल जाता है कोटा हमें. And again back. Exactly. I love the word you used, Rashmi. You said it's a lovely world. It's a beautiful world. It's a happy world. More importantly, it's just so fun and so much. And I think that we are all holding hands right through that conference. I don't even Yes. think we get into our rooms for 5 minutes. Am I right? We're in there and we're out there. And then we're back again dressing. Again, we're talking, we're discussing. We've got parents talking all the time. I have never seen parents shut unless I tell them, shut now. But otherwise, they are just, sharing so much of their lives. So, yes, I think all of us need to get there. And yes, anybody else, please move on. Keep talking, keep talking. बिल्कुल. और एक एक करके हमारी जो है यहाँ संख्या 30 से ऊपर हो चली है. जो नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है, मैं बता दूं कि आज का सेशन है डाउन सिंड्रोम फेडरेशन के बारे में, फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, हमारे कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, रेखा माँ के बारे में. कोई भी सवाल है, कोई भी सलाह है, कोई भी मशवरा है आपका जो आप हमारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए देना चाहते हैं, और उन कॉन्फ्रेंसेस से आपको क्या मिलता है, या कोई कुछ भी किसी भी तरह का सवाल, ये ओपन फोरम है. मेरी आज यहाँ कोई इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ हूँ. सीधे आप रेखा माँ से बात कर सकते हैं. Yes, Rama, you wanted to say something. You're on mute. Hi everyone, happy Dasara. So last 30 years, madam, I am in this family. Last 3 decades out of your 40 years, last 30 years we are with you, and lots of information. The way this group has grown, it is fabulous. I can't imagine. Probably it is the right day today, auspicious day, Vijayadashami. You being our guru, God sent is what I would say, and our wishes to Babli as well, because she's like a Durga Ma for our group, a Shakti. Otherwise, we would not know how to bring up my son. And today's Taban is quite independent. I think, as you would say, I would not worry about his future.
whether we are here or not here. Family is there, support is there, sibling is there to take care and everything. So few weeks back when his teeth was falling, I was a little jittery. And I also texted you immediately. I got support from Brinda ma'am with all doctor names, and the doctors were so helpful in consulting and all. And now I have told Shravan, see, you're going to get your new teeth. So today, when his sister saw his front teeth, he asked, "Where is your teeth down?" எனக்கு புது teeth. He's saying, எனக்கு new teeth வர போகுது. So so the positivity which we have to bring without getting stressed. So I feel these type of small conversations as tidbits in our group, if experienced parents can keep posting, it will help new parents to imbibe positivity in the child, to speak to the child saying that don't worry, da, see, I'm also getting old, my teeth will also fall. You're a big guy, you're a mature guy like Tata, Patti, everyone, your teeth is also falling down, that's all. So it's by nature and it's not to get worried. So small example like this, we have to build on positivity because health is one concern. It is not for these children, it's for all of us as well. So I think I've used this group, the doctors here, Dr. Rangarajan, for my cousin who was depressed. So that guy got treated. So I think Shravan is one center from where I get all information for the family as well. The Thank you best set so of much. doctors we can get. So for all this, the good work from your end, madam, but for Thank which you, thank you. this would not have happened. Yeah, Yeah. well, thank you so much for that feedback. It was Yeah. amazing. And true, there are so many such issues that keep cropping up in our lives, and we should make records of it so that the next generation learns from us. Yeah. Yes. Anybody else? रेखा मैं बात माँ, कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, कौन बोल रहे हैं? बीना बात कर रही हूँ। जी बीना जी बोलिए जी। कैसे हो पारुल जी, रेखा जी, मैं माँ और बिल्कुल सबको हैप्पी नमस्कार, दशहरा। नमस्कार, बीना, how नमस्कार। are you? मैं ठीक हूँ एकदम रेखा माँ, मुझे माफ करना मैं फोन नहीं किया है क्योंकि लाइफ में मेरी बहुत पीछे बहुत कुछ चल रहा था जतिन के अलावा, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी और मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। नहीं, धीरे नहीं, ये धीरे सब डिस्टर्ब का वर्ड बिल्कुल मत यूज करो, ओके because that is ओके not something that happens in families. ओके अगर मैम, प्यार करते हो तो डिस्टर्ब किसी को नहीं हम करते, या आई लव right? यू ऑलवेज। I love you, so आप करते रहो. I mean, I have time for ओके मैम, everybody. Okay, don't थैंक यू। worry. और मेरी एक इच्छा है कि मैं सबसे पहले आपको पर्सनली मिलूं, इसलिए मैं फोन अवॉइड करती हूँ कि भगवान कभी मिलाएगा मुझे आपसे पर्सनली। तभी बहुत सारी खुल के बातें करनी है, तो मुझे मिलना है बहुत ही जल्द। उसके लिए भी मैं अभी आपको फोन करके बात करूंगी। और अभी धीरे धीरे मेरी लाइफ सेटल हो रही है, तो अभी मुझे कुछ टिप्स में अभी मनशा फाउंडेशन में भी अभी एक मीटिंग रखी थी, वहां पे भी गई। वर्षा मैडम ने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए और मुझे कहा है कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे फोन करना। Very अभी nice. सच सच में सोचो ना, तो अभी थोड़ा जतिन के पीछे ज्यादा कॉन्शियस होने लगी हूँ। अदरवाइज जतिन जो भी कर रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे ही करता रहेगा, पर मुझे वर्षा मैम ने समझाया उसको टोका करो, आप उसको नहीं बताओगे तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि वो गलत कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफ में और कुछ चल रहा था तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, पर अभी सब कुछ सेटल हो रहा है और अभी मेरी जर्नी सच में समझो तो अभी शुरू हो रही है कॉन्शियसली। तो उसके लिए बहुत कुछ ढूंढ रही हूँ मैं। तो जैसे डांस क्लास करवाना है उसको, बहुत सारे सपने हैं मेरे उसके लिए, बहुत सारे। Very तो nice. Proud of you. अभी तो उसका जो रूटीन है वो ऐसा ही है, वो स्कूल जाता है, डे केयर जाता है, उसकी थेरेपीज चालू है। लकीली मुझे थेरेपीज भी पहले से बेटर मिल रही है। बस अभी मुझे आगे बढ़ना है, तो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मैंने वर्षा मैम से टिप्स लिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको फोन करके ही बोलूंगी। पर Very वेरी good. सॉरी, आप करिए. मैंने आपको फोन नहीं किया उसके लिए, माफ कर देना मुझे। प्लीज करिए आप, and don't worry about ये sorry हाँ sorry मैम, families में नहीं होता है. ओके मैम, सब ओके। कुछ छोड़ दिया हमने, मैं किसी इसलिए ने काफी sorry सारी मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर पाती थी। मुझे इच्छा होती है मैं एवरी सैटरडे करूं, पर कुछ ना कुछ अभी आगे पीछे चलता रहता था। पर आज मैंने सोचा नहीं, आज करना है कुछ भी। मेरा हीरो भी सोया है थोड़ी देर के लिए, मेरे लिए ही सोया है, नहीं तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, बट आज सो गया है वो। रेखा माँ बस जब भी मेरे प्रोग्राम में आती हैं बीना जी, ऐसे ही लोग टाइम निकाल लेते हैं मेरे लिए, ना सही रेखा माँ के लिए नहीं नहीं सब नहीं आते मैम, आपके हैं। तो सब रील्स देखती हूँ मैं अभी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। जी, शुक्रिया। या हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर म्यूट आप अपना हटा लीजिए भैया। नमस्ते जी।
नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया रेखमा, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे सुन, और बिल्कुल सब ठीक ठाक। कैसे हैं आपके लड़के, कैसे हैं? बस अभी चल रही है हमें जो कि आपने जो हमें बताया था कि जो ये मंथ है, ये डाउन सिंड्रोम जो अवेयरनेस मंथ है, तो उस सिलसिले में हमने स्कूल में भी एक्टिविटीज की हुई है। मैं जल्दी ही वो एक दो वीडियोस अपलोड करूंगा जो प्लीज। हमने एक्टिविटी स्टार्ट की। वेरी गुड जी वेरी गुड वेरी गुड। आपका जी अवेयरनेस प्रोग्राम हमको हमको डेफिनेटली आप भेजते रहिए, बिकॉज वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। जी जी ओके, जी 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 बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। रेखा माँ, एक बात आपसे जानना चाहूंगी। जैसे अभी बीना भी बात कर रही थी, और अगर मैं भी आपसे बात करूंगी तो 2-3 सेंटेंसेस के बाद मैं भी चांदनी पर आ जाऊंगी। हमारा कंसर्न अपने बच्चों से रिलेटेड ही होता है। हम सफर में हम जब बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो हमारा यही आ जाता है कि हमें बच्चे के साथ और क्या करना चाहिए, या अपने एडल्ट एडवोकेट के साथ और क्या करना चाहिए। आपने डीएसएफआई तो स्टार्ट किया ही, फिर ये कॉन्फ्रेंसेस भी स्टार्ट किया। आप इससे पहले बाहर शायद जाती रही होंगी, वहाँ इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। तो ये आपके मन में कैसे आया कि इंडिया में ये कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट किए जाएं, और इतने सारे बच्चों के बारे में आप कैसे सोच पाई, जबकि हम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोच पाते हैं? पारुल, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज पहले मेरे को तो पढ़ना था and I needed to know the subject. But the more important thing is that when I started the first meeting we had in Goa, जब हम families, I think hardly about 30 families हमने meet किया, और हमने उसका नाम हम सफर रख दिया। क्यों रखा ये भी मैं नहीं मालूम था, but I just thought to myself, हमारा सफर एक ही है ना, हम्म। कोई अलग सफर नहीं होता है। जब when you have a child with Down syndrome, there is only one road that we are all traveling. And then from there we said, अब ये कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पूरे इंडिया से, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड वेस्ट को कॉपी करना है या ईस्ट को कॉपी करना है। इंडिया इंडिया ही होता है, एंड इंडिया में जितना इंफॉर्मेशन हमको है बाहर से नहीं आएगा हमको, बिकॉज ट्रेडिशनली वी आर डिफरेंट, कल्चरली वी आर डिफरेंट। सो हम किसी को कॉपी करने के लिए नहीं किया है। बट आई सडनली रियलाइज्ड ये हम सफर पहले एक कॉन्फ्रेंस तो रखो जहां पे लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे। वी नीड टू टेक एवरी एस्पेक्ट राइट फ्रॉम बर्थ टिल द लास्ट डे, वी नीड टू प्लान। एंड ये प्लानिंग प्रोसेस कैसा होता है, along with पेरेंट्स, ये अकेले नहीं कर सकते हम। we needed feedback, we needed to take information, more and more ideas from people। तो ये एक कॉन्फ्रेंस पहले शुरू हुआ दिल्ली में। You know, it was the biggest conference and it was such a bounding conference, but support के बगैर हम नहीं कर सकते। So we realized that every state must have an association, and the associations will work together, because Parul, one big problem we have in India, we have a language issue। तो आपको जो भी information, you have to do a propaganda, you have to spread, you have to do it in your own languages। अब देखो हम सफर का, it has gone into various languages। You won't believe Ahmedabad has got 3 groups, Karnataka has got groups, Tamil Nadu has a group which only in their own local languages। It is spreading like wildfire। So जो एक, I just planted the seed and I got thousands of people to support me। ये हमने अकेले बिल्कुल नहीं होता है। It is about all our families joining hands, giving ideas and working together। But it was important that we are not doing it, our children are making us do it। Again and again I say, what are we doing for your children? ये बिल्कुल मत पूछो, आपके बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं। They are actually changing our life pattern। विजयदशमी हुआ तो they are the happiest people। कुछ भी, any puja in the house, you know, your children are the happiest people। They are celebrating, why? They love food, they love dance। So all of that I took into my mind, Parul, what they like, and converted it into the parents dressing up। You have seen our conferences, Parul, I don't know about the self-advocates, but the parents just love getting their costumes, their designers, the amount of pain they take over buying makeup. Oh my God. It's amazing what happens in our conferences। I want the parents to understand, you have to live to let your child live। You have to be happy, you have to be in the moment, you have to be absolutely elated about the fact, yes, I have a child with Down syndrome, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है यार।
सबको फर्क पड़ता है, that's their problem, not ours. Our world is different, Parul. It will always remain different. I am telling you again and again, you are my family and we will keep expanding our family. यस रेखा माँ, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. कैन आई अलाउड? You're more than allowed. यस. आपने बताया था कि हम गोवा में गए थे, तो वहां पर हम पहले कुछ लोग मिले, तो हमने इसका नाम हमसफर रखा. तो मुझे एक जबरदस्त शेर याद आ रहा है इस पर, वो आपकी नजर. हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल मगर, लोग चलते गए और कारवान बढ़ता गया. तो ये आप ही की देन है हमें पूरे इंडिया में, जो आपने एक अवेयर किया हमें कि ये इनको के साथ कैसे चलना है, ये सोसाइटी में इनका कैसा आदर और ऑनर होना चाहिए. तो मैं जब इन रिलेटेड जितने भी यहाँ पर फंक्शंस होती है, लास्ट ईयर हमारा एनुअल डे था स्कूल का, तो जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स एंड बड़े बड़े जो सोसाइटी के लोग आए थे, इवन सम पॉलिटिशियंस, बिग पॉलिटिशियंस, दे पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल. तो जब मेरी बारी आई, जब मुझे बताया गया, तो आई रेफर योर नेम कि हमें जो प्रेरणा जो है वो है डॉक्टर सुरेखा माँ जो है, जो उन्होंने दी है हमें. तो हम आपका किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे, इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं. Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने. और रेखा माँ, यहाँ पे एक बात और आती है कॉन्फ्रेंसिस को लेकर पेरेंट्स के मन में. कई बार उन्हें लगता है कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, जबकि मैं ये मानती हूँ कि 800 रुपये का अगर हमें कोई मेडिसिन लेना पड़ता है या कुछ और चीज़ लेनी पड़ती है, तो हमें लगता है यार ये इतना महंगा है, इतना लूट लिया. लेकिन 800 रुपये का पिज्ज़ा ऑर्डर करने में हमें जरा भी देर नहीं लगती है, उसके लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं. तो इसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगी? बिकॉज इसके लिए सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लगता है, एक चेंज ऑफ थॉट्स लगता है कि आप सोचें कि कई बार पैसा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार समय इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको अपने जीवन में ये किस तरह बैलेंस हम कर पाएंगे कि कब पैसा लगाना है, कब समय बचाना है, कब किस चीज को कितना इन्वेस्ट करके और हमें क्या मिलने वाला है? पारुल, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, योर ईयरली हॉलिडे है. आप हॉलिडे नहीं लेते हैं, बिल्कुल. फैमिली के साथ नहीं जाते हैं, तो एंड यू आर गेटिंग फन, यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन. आप एक इंफॉर्मेशन पैकेज के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? My point is, you're coming here, we're giving you all the medical information on one platform. आप घर वापस जा सकते हो आराम से 1 साल तक. You can just relax. The idea is to give you everything, fun, information, logic, explanation. Otherwise, I travel the world. How much I had to spend? I didn't have the money, Parul. I was begging, borrowing, and going. But I needed to understand that unless I learn, what do you come to a conference? Don't you take back some information? No, like today, this conference, Parul, you realized that your daughter had art in her. Did you not realize it? Yes, That there मुझे was बिल्कुल an नहीं पता artist था. in that child. Whatever. I mean, my point is, with every conference, I tell the parents, there will be something you will identify about your child which you don't know. So look for those clues. It's like your उनका God is giving. कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है वहां पर, अलग ही. वो इतना अपना मतलब वहां के शेर होते हैं वो, बिल्कुल. बल्कि मैं अपनी बेटी को उठा के ला रही थी 8 क्लास से कि नहीं चलो अब चलना है, शाम के फंक्शन के लिए तैयार होना है. श्वेता ने मुझे मना कर दिया कि ठीक है अगर वो ये कर रही है तो उसे ये करने दो, आप क्यों बीच This, में बोल रही हो? बाद this में आके this उसका मन is नहीं what किया. I say. You are not understanding that the child has found the happiness of being with their own people. And this is what I tell everybody. Like when Bubbly was a small child, I learned this from her. Bubbly ने सब कुछ मेरे को सिखाया. We were in this large room with children with cerebral palsy, autism, तब सबको mingle करते थे. And there was only one child with Down syndrome. Only one child. वैसे ही निकल के she went to that child, held their hands, and they went out. So I realized that it's like a clannish thing. They identify with their own people. That was one of the reason I created the Humsafar, because with them, they know that they are the strongest. They don't have to talk. Many of our children are non-verbal. You know that. And here there is no language.
There's absolutely, and they understand each other so beautifully. Have you ever seen? I'm always observing the children talking to each other. बातें ही नहीं होते हैं, but हंसते रहते हैं. They are so comfortable. It's about a comfort level that I want our children to have. Whereas when they are, ये word inclusion जो होता है ना, this I have never understood. किसके लिए झगड़ा कर रही है यार? इंक्लूजन इंक्लूजन इंक्लूजन. अगर आपको हमारे बच्चे नहीं चाहिए तो बंद ही करो यार. My child is ready to go anywhere and be happy and included. But you are making all the barriers. I never made it. My child never made it. But the world makes it. And I don't care about the world. I want them to be comfortable. They are so happy with their people. And even with Bubbly being with you, she relates. She knows this lady is a comfortable person. They can identify. Our children are the ones who are actually leading us. We're doing nothing. Nothing. Actually they are. इस बार पहली बार जिन्होंने हमारा कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था, मेरी एक दोस्त सोलिडेरिटी यहाँ पर है. मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उन्हें कैसा लगा. रेखा माँ, आप उनसे बात करना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लगा ये वाली कॉन्फ्रेंस में जाकर? You can see that expression on her face. She's so happy. I'm solid. Yes, unmute Solidarity. Oh, one smart little guy has come up. Yeah. Hi, Rekha Ma. So Hi, nice to see everyone. you. Hi, So Solidarity. happy to see you. Yeah, after a long whole month. 1 month, long time. Yeah, 1 month. So how was your experience of this conference, Solidarity? Yeah, I felt so blessed, so grateful and thankful to especially Rekha Ma, Sister Bubbly, and the whole entire DSFI team who make this conference wonderfully, beautifully, and successfully. I have learned so many things from the conference, got to meet new seniors, parents, learn from them. And then now, yes, I'm right home back now. And then maybe I could help some other parents through experience from the parents that I've met there. So thank you, everyone. He's already for, formed a group. How many people in Solidarity you've already collected? now, yeah, now we are having nine 9. parents. Wow. Yes, ma. Wow. So Thank you. proud of But a lot of things to be learned from you. Oh, you'll be surprised. We'll be coming there very quickly. Sure. So yes, we are so happy that you attended the conference because it was like, Parul, the entire family was there. And it made such a difference to her that she was being Yes. supported. And it was so Yes. lovely, so बिल्कुल lovely. दोस्तों, Thank हम आपसे ये भी जानना Yeah. चाहेंगे कि जो कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड किए हैं, आपका अगर कोई सजेशन है कॉन्फ्रेंसेस के लिए या कोई चीज आप और चाहते हैं जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस में होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं अभी के अभी. Yeah, actually, I'm a young parent. Yes, Rafaela was just 1 year, 10 months now. So a lot of things to learn from you, ma'am. I don't have anything to say regarding the conference. I just love the conference. Hopefully, Thank I'll you. be able to attend next year as well. You will. I mean, don't worry about that. Your name is already there. सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, Hey, सोलिडारिटी. Shweta, can you open up a little bit? श्वेता, Shweta, आप अभी बात कर सकते हैं. you're वो on कुछ में mute. बहुत ही- Hi, I'll just join y'all in some time. Okay, you're partying. Okay, bye-bye. हेलो, नमस्ते रेखा माँ.
जी नमस्कार नमस्कार नमस्ते रेखा माँ। नमस्कार। नमस्ते पापा जी। जी नमस्ते। मैम, अब की बार मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी और जाके बहुत ही अच्छा लगा। काफी मेरे ख्याल से मैं सबसे फर्स्ट या सेकंड वाले में मैं ज्वाइन किया था जब आप लोगों ने बैंगलोर में किया था, और उसके बाद फिर अभी कोलकाता में जाने को मिला। अम, बहुत अच्छा लगा। काफी सब पेरेंट्स से मिले, आप लोगों से मिले, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला सबसे। और इस बार मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैं नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती हूँ, असम से बिलोंग करती हूँ मैम, बट मैं नोएडा में रहती हूँ। मैंने ये चीज नोटिस किया कि हमारे असम साइड से या नॉर्थ ईस्ट साइड से सिर्फ जैसे मान लीजिए भी सॉलिडारिटी आई थी, उस तरह से, या उस तरह से मैम हमारे असम से या नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आप जो भी कह लीजिए, उस साइड से बहुत ही कम पेरेंट्स का अटैचमेंट हुआ। गिन के शायद मैं 3 या 4 पेरेंट्स से ही मिल पाई। तो मैं खुद शायद कोविड के टाइम पे मैं 4 साल असम में ही थी अपने पेरेंट्स के साथ में। उस टाइम पे मुझे 3-4 डाउन सिंड्रोम के बच्चे हमारे साथ में, मैं उनकी फैमिलीज को मिली थी। बट उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे वहाँ के लोगों को, वहाँ की सोसाइटी को इतना अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में। वो इस चीज को मान के चलते हैं कि ये बच्चे मानसिक तरीके से बीमार हैं, इनको कोई अलग तरीके से हेल्प नहीं मिल पाएगी, जो कि हमने नोएडा में आकर, दिल्ली में आकर या बड़े शहरों के लोगों में देखा है कि उन लोगों को बहुत सारी थेरेपीज वगैरह मिली हैं, स्कूल्स वगैरह मिले हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह जॉब्स वगैरह करने लगे हैं। बट ये चीज मैंने नोटिस किया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में ये नहीं है मैम। तो आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से उनको इन सब चीजों से अवेयर करवाएं। मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की है वहां पर, बट कह सकते हैं कि वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, मिलने के लिए भी हिचकिचाते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या हमारे बच्चे ठीक है, आप लोगों से, हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहे, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होने देते हैं मैम। तो तो मैं थोड़ा सा हाँ, तो वेरी सिंपल। आई मीन अब हम गए थे, डिब्रूगढ़ गए थे। डिब्रूगढ़ में ओह, हमने कैंप, हाँ वी डिड अ कैंप इन, हम कोई स्टेट को छोड़ते नहीं है। तो वी ओह, डिड अ दैट्स वेरी बिग वंडरफुल। कैंप इन डिब्रूगढ़ एंड वी हैड अबाउट 70 पेरेंट्स। सो the ओह, only thing is, let me tell you, वो 70 पेरेंट्स को लगता है कि बाहर का दुनिया अलग है, ओके? एंड वो जब, एंड आई, माई important thing was to give them medical information. And I यस can यस, tell you one thing, Dibrugarh is beautifully established. मैंने ऐसा मेडिकल कैंप करेक्ट, कहीं नहीं देखा है. They had doctors यस from every field and they were giving the information correctly. So my यस point is, जब एक स्टेट में ऐसा होता है ना, you have to यस मैम। understand that you don't disturb that state. Because to me, हमने उनको information दिया है. We took every child into our group and we talked to यस every मैम, parent and we tried यस to मैम। explain. We had interpreters because उनको तो English मालूम नहीं था, हिंदी बहुत से लोगों को जरा सा कम था, but they were amazing. क्या development है यार. My point is, we are thinking of them as a state which has not evolved. They are evolved. अपने ही दुनिया में टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं. And I was very proud of them. See, ये नहीं है कि you have to attend a conference. हम जाएंगे उनके पास. So I would यस like यस you to hold camps every part of India where we will bring in the team of people, sit and talk to them यस यस, and tell them बाहर की दुनिया में ऐसा होता है तो आप वो implement करो. See, you can't यस मैम, force the systems to move out of the. Tamil Nadu was 20 years ago, nobody even moved here. Okay? यस It took 20 years for all of us to come together. It will happen, but यस very मैम, slowly. And स्लोली करेक्ट। the camps in I've had in Rourkela, amazing. Ah, हाँ, hi. तो देखो शुभ दशमी। शैतान शैतान आ गया है, इसने मेरा माइक छीन लिया था. आमी बोलबो, आमी बोलबो. अरे शुभ दशमी जोड़े बोलो। नमस्कार. Hmm. शुभ दशमी। विजय दशमी. हैप्पी. तेरे को वो बहुत डांस करता है तू, बहुत डांस करता है. अब सुनो, इट इज नथिंग टू डू. आई थिंक वेयर यू आर, नो, if you are in Assam, you're in Meghalaya, we have expanded up to Ladakh now.
All right. We are slowly Yes, going. ma'am. My only thing is that many of the states हाँ, बाहर आने में problem होता है. Yes, ma'am. Yes, It's ma'am. also Correct. it's sometimes not financially feasible. So we are Yes, giving yes, correct. options at 5 people per state, and if you want financial support, वो भी हम करेंगे. So if you tell Okay. them that it is only finance, I will not agree. That also we are prepared to, but we want them to take back the message. See, Yes, it is correct. about creating an awareness in your state. If you come here and just enjoy and go back, you have to do something also. So Yes, yes, yes. he's gone back. Solidarity has gone back and already connected with 9 families. So it was such a beautiful thing that she wrote to me about they even have a vision and a mission, Parul. They created the entire thing. And I am so proud of her because this is what we want, that you go back and carry the message that this is India and we can do it. So if each one does it, see, I can only, you call me for a camp, I will be there. I'll stand next to you. We'll run the camps. You bring together 10 people, I'll stand next to you. And that's what they did in Dibrugarh. They did it in Rourkela. It is spreading into Wow. Bhubaneswar, in Puri, in Cuttack, everywhere. So it's not as if we are not, we are trying to. We went to Goa and we have definitely tried to establish an association there. So we are moving from part to part and everywhere. So we are looking at various parts of India which don't have an association, create an association. Delhi did Yes, not have an association, Rashmi. It took us a long time to create an association in Delhi because see, this is not about who's going to be the president, who's going to be the vice president. This is not power politics. हमारे यहाँ पे Yes. politics होता ही नहीं है यार. हम एक family है. कोई बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता. हम जब when we join hands, we have to join hands to share information and don't withdraw or not help your people because language is a very big problem, Geetali. It's nothing else. Yes. See, Yes, ma'am. Yes, ma'am. sometimes some things can happen, some things, but we promise you, India will be one in the next 10 years. I promise you. Definitely, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Shweta, Thank you We so are much. with you Thank on that, you, Rekha ma. Geetali. We are with you. Next 10 years, let's count for next 5 years. Yes, India will be one and we'll have the largest. In fact, a lot of people are asking us, how do we keep India together? We don't. We are together. We don't have to keep us together. We are a big body that just loves each other so much because we as people are basically very loving here and we don't understand this power politics. कौन बड़ा है, किसको award मिला, किसी को नहीं चाहिए यार award, या award लेके क्या करेंगे? Love, I want affection, I want true people who are going to spread the message. And you guys are amazing. Just caring about your people is what I want you to do. And just keep spreading the message that our children are not something that you have to hide. Because it Yes, happened of for course. many years in many countries. They are now very good. Yes. जी Looking at you, he's asking Vedic Village कब जाना है फिर से? Huh? ये हाँ? पूछ रहा है looking at you Vedic Village फिर से कब जाना है? कभी नहीं जाना है, यहाँ से निकलो कहीं और जाते हैं. वैदिक विलेज का हो गया हमारा. हमारे दो दोस्त अपने हैंड रेज कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, हिमलता Yes. मैम से और प्रियंका जी Yeah, से. Gunjan, go ahead. Oh, Priyanka. Good evening, ma'am. How are you? Yes, Priyanka. But thank you so much, Gunjan. The chocolates were the biggest hit in the world. And every conference, you are providing us the chocolates. They were lovely. Thank you so much. I would have eaten 3 packets myself. Thank you. God bless you. Thank you, you so much. Aditya. That was amazing, Aditya. Those were the best chocolates. Yes. Ma, I just want to contribute something for today. As you are already doing such a wonderful work कि कुछ है नहीं बोलने के लिए ज्यादा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि मैं अगर शेयर करूं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा. बिल्कुल बताइए. Please. मैम, एक तो मैं चाहती हूँ कि ना आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एज वाइज मेंशन करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं रिटर्न में, कि बर्थ पे कौन से डॉक्यूमेंट बनेंगे 5 इयर्स के, कौन से जो सेंट्रली बनते हैं, स्टेट वाइज नहीं. आई मीन जैसे यूडीआईडी है या निर्मया है का कार्ड है या डिसेबिलिटी है, तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे जाके ना कोई भी देख सकता है कि किस एज में कौन सा सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है. Correct. I agree with you totally. It will be done.
ना। सेकेंडली मैम ये था कि जो स्कूल्स इंक्लूजन को दे रहे हैं ऑलरेडी बढ़ावा, उन स्कूल्स को मैम डीएसएफआई की तरफ से ना कुछ सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन का डिसेबिलिटी डे पे या अक्टूबर अवेयरनेस मंथ की तरफ से जाना चाहिए आपके एंड पे. सो इट गिव्स एनकरेजमेंट टू द स्कूल एंड other schools should also look forward to getting that kind of certificate from you. I think that's an amazing suggestion, Gunjan. Thank you so much. Great thinking. Great thinking. और था माँ कि जैसे स्टेट वाइज हम स्कूल कमेटी भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ पेरेंट्स जो बहुत एंथुजियास्टिक हैं उनका हम स्टेट वाइज कुछ बना दें कि अर्ली इंटरवेंशन के अंदर 5 साल से छोटे बच्चों का कोई भी इशू आता है तो उस कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाए वो. और वैसे तो ज्यादातर स्कूल्स एडमिशन के दे रहे हैं, बट समहाउ कुछ जगह आ जाती है प्रॉब्लम, तो वो जो पेरेंट्स रहेंगे जो एजुकेटेड हैं, उनको लॉस के बारे में पता है, दे कैन स्टैंड फॉर द चाइल्ड देयर. Right. Agreed. Totally. So और था मैम take that and send it to DSFI, please. Yeah. और मैम एक चीज और थी, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना उनका एक लिंक, जैसे निर्मया का लिंक हो गया, यूडीआईडी का लिंक हो गया, वो लिंक आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए, जेन्युइन लिंक, तो पेरेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहो, बिकॉज वो एक ऑथेंटिक साइट पे जाके और ऑथेंटिक लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे. और इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो वॉलंटियर कर सकते हैं वो फॉर्म्स भरवाने के लिए उनके लिए, जैसे शिखा है या कोई मैं हूँ या कोई भी और भी पेरेंट्स, जो सीनियर पेरेंट्स और हैं, रश्मि मैम है, अनिल सर हैं, आदित्य सर हैं, रंजन सर है, बहुत सारे हैं, बहुत पेरेंट्स हैं, कि उन डॉक्यूमेंट्स को फिल कराने में किसको कोई स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम पे कॉल करके वो भर सकते हैं, क्योंकि So what उसको भरना. we should identify people in every state who can support, right? Yes, ma'am. और मैंने कुछ लिखा हुआ था जी कि गुंजन, बोलिए बोलिए. और ना मैम कि इमरजेंसी नंबर्स ऑफ द डॉक्टर्स इन केस डाउन से हमारे किसी बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो कोई ऐसे डॉक्टर्स, वैसे तो माँ आप हमेशा ही अवेलेबल होते हो सबके लिए, लेकिन कोई डॉक्टर्स हो, पीडियाट्रिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो हमें अवेलेबल हो कि हम उनको कांटेक्ट कर सकें. This can be a little challenging because doctors. Rekha, I have an extended suggestion to what Gunjan was saying. I was saying if we can have a helpline number. Yes, it's usually kind of automated helpline. now like a bot. So हाँ. anyone who goes on Google, they get that helpline number. It's usually a bot, pre-fed messages आता है, but it goes to a group of volunteers, someone who can contact. Because what I see, there are two major age groups where parents need, सबसे ज्यादा support. One is at birth and second is after school. These are the two stages where parents need the maximum support and the parents are completely lost. So I think this helpline number, if done properly, will really help everyone. Yeah, okay. I think we made a note of all that. We will जी be. मैंने लिख लिए हैं. Yes, नमस्कार रेखा माँ. नमस्कार. हाँ बोलो. हाँ, मैं प्रियंका बबराला से, मेरी आपसे एक बार ही इस पे ही बात हुई है ऑनलाइन. हाँ. मेरा बस एक सजेशन ये है, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाई, मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत मैंने एफर्ट किए, फैमिली सपोर्ट नहीं, ड्यू टू मैं जॉब में हूँ, टीचर हूँ, कि छुट्टी नहीं थी, इसलिए मेरा मतलब छोटा सा सजेशन है कि ऐसे प्लान कीजिए कि एटलीस्ट 2 हॉलीडे ऑलरेडी हो तो 1 लीव मैं ले सकूं, क्योंकि मतलब frankly I am telling you, my husband is not supporting and this time he is not in the house, that's why I am talking. So many time I am watching these videos कि आज कॉन्फ्रेंस है, आज ऑनलाइन है, मैं कभी अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि बच्चा होता है, आज वो सो रही है समाया, तो मैंने कहा मैं अटेंड कर लूं. और मैं ये बात अपने दिल की कहूँ, मतलब मैं दिल मसोस के रह गई 10, 12, 11 सितंबर में कि मैं नहीं जा पाई वहां पर, क्योंकि आई वांट टू लर्न. मैं ग्रुप में एक नई मेंबर हूँ, अभी 4-5 महीने हुए हैं, और थैंक्स टू दीप्ति माथुर, उन्होंने मुझे सब कुछ ये बताया. मेडिकल कैंप मैंने अटेंड किया दिल्ली का, उसके बाद में है ना आपसे लोगों से जुड़ी. जब भी कॉन्फ्रेंस हो नेक्स्ट ईयर तो प्लीज माँ छुट्टी में रखिएगा प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अकेले लेके आ पाऊंगी उसको, मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, कहीं भी होगा तो मतलब मैं प्लान कर सकती हूँ. Yeah, Priyanka, this time we are changing the dates.
We are trying to change the date so that we can keep it in your summer holidays. The only thing is that we have to look at every states का जो पूजास होते हैं ना, बहुत से states में there are so many pujas right through the year. आप देखो, जब भी देखो इंडिया में कोई फेस्टिवल होता रहता है. Yes, ma'am. Exactly. I go to every state to see how many people can come from that particular state. But your suggestion is good, and we will try to keep it during the summer holidays. बहुत गर्मी भी होता है उस टाइम पे, but we will try and see what best we can do. हाँ, Okay? समर में होगा उससे तो बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समाया के लिए कुछ अभी जैसे आपने मुझे पहले सजेस्ट किया था बिफोर 3-4 मंथ की नहीं बोलती है, पानी को मम्मम बोलती है, इट्स ओके। तब से मैंने बहुत पॉजिटिविटी अपने ब्रेन में बिल्कुल पैदा कर ली है कि कोई नहीं बोलेगी। अभी 50 वर्ड्स पर आ पाई है। अब वो 6 इयर्स की हो गई है, डांस बहुत अच्छा करती है। लेकिन उसके फादर का ये है कि एम्स में हमने जब फर्स्ट टाइम दिखाया था तो वो किसी बेवकूफ डॉक्टर या इंटेलिजेंट आई कांट से कि ये सब करेगी, लेकिन है ना थोड़ा टाइम लगाएगी, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको लगा कि ये कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने बताया तो कि बस क्या है, सब एंजॉय करेंगे और क्या है, वहां जाने से होगा क्या। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा टिप्स दीजिए कि मैं उनका ब्रेन वॉश कर सकूं आपकी वो तरफ आदमी से। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है यार, एंजॉय तो कर रहे हैं ना, लाइफ में एंजॉय करो प्रियंका, स्टॉप वरिंग अबाउट द यूनिवर्स। हस्बैंड को भी मारो गोली यार। माय ओनली एटीट्यूड इज वन थिंग, जो हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उनको तो जस्ट फॉरगेट। माय हस्बैंड डिड नॉट सपोर्ट मी फॉर 11 years। अब भी जो भी आइडिया देते हैं ना, वो फूफू करते रहते हैं, तो वो क्या है, बड़ा आइडिया कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बट माय पॉइंट इज आई डोंट केयर। फर्स्ट डोंट केयर मास्टर बनो यार, अपने बारे में सोचो, अपनी डॉटर के बारे में सोचो। व्हाट डिड आई टेल यू? फर्स्ट लव योर चाइल्ड। इफ दे डोंट लव, दे विल लव। योर चाइल्ड विल मेक देम लव देम। Bubbly today he can't eat his, Bubbly is 43. Ask him to have his lunch. Bubbly only gives him food. You don't have to worry. Relax. First relax तो करो यार तुम लोग। बहुत माँ मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अब आज कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो। नहीं, अब जैसे मेला में बच्चा को जाना है, हम टाउनशिप में रहते हैं, एक छोटा सा फंक्शन है अच्छा सा, लेकिन वो है कि मैं समाया को अकेले लेके पैदल नहीं जा सकती। चलो कोई नेवर चले जाएंगे, कार से जाएंगे, लेकिन वो भागेगी इधर उधर। मुझे लगता है कि 2 आंखें और हो तो उसको मतलब कोई हार्म ना हो, बट ही बेंट टू महाराज जी। प्रियंका, यहाँ आप ना रेखा माँ से आप अलग से बात करिए, और दो आपके हस्बैंड की हो ओके, ये मैं जरूरी कुछ तो ज्यादा नहीं है ना, दो आपके हस्बैंड की हो प्रियंका, ये जरूरी I नहीं, love आप you एक very, हेल्प। I want to tell you that we all love you very much. ये इतना प्यार जो मिलता है ना, वो एक आदमी का प्यार उससे इंपॉर्टेंट मत बनाओ यार। और आप ना एक जरा सा कम्युनिटी बनाओ जिसमें 4-5 लोग हैं who will also support you. If you think they're not going to support you, they will, but we don't ask. आप नहीं पूछोगे, that's the problem with all of us. We always think somebody else will think something. You have to ask. अगर आपको बाथरूम जाना है, आप अनवेल हो, तो क्या करोगे? These are very important issues. You need to have more than a husband, and you need to have a support system. It's not always family members. There are good friends. So reach out to them and say, I need you. Can you come and be with me? And I tell you one thing, my daughter has drawn together so many people. It is them that they do it. We don't do it. वो अपने आप खींच के लाते हैं. So you just relax. आपके मुंह में इतना स्ट्रेस क्यों है यार? आज विजयदशमी है, जाने दो। रावण जैसे उनको रावण समझो और फटफट वो एक क्या करे, बॉम्ब डाल दो यार। My point is only one thing, don't get excited about what you don't have. Think of what you have, Priyanka. Life is so beautiful. The sun is shining. Imagine one thing in life. The child came to your life, right? And as long as she's looking at you, stop worrying about everybody else. I'm telling you, she will be there and we will help you for the next conference. You will be there for the next conference. I promise you. Okay? Okay. Lots of thanks and love you, ma. Love you, sweetheart. Love you. Parul, you froze again. Yes. Anybody else? हेलो माँ, कैसे हो? Yeah. हेलो माँ, कैसे हो? Oh, शिखा आ गए। I love you, शिखा। बोल। आई लव यू माँ। माँ, मैंने ना गुंजन का सजेशन सुना, गुंजन के सारे सजेशंस बहुत अच्छे हैं। उसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगी कि हम जैसे हर स्टेट वाइज या हर सिटी वाइज
हेलो, बोल। हर सिटी वाइज जैसे कुछ पेरेंट्स, 2 या 3 या 4 पेरेंट्स हमको पता ही है, हमारी एसोसिएशंस भी हैं, उनके नाम या उनके नंबर हम ऐसे कर दें जिससे कि जो एकदम जैसे जो 2 पेरेंट्स 2 स्टेज पे पेरेंट्स को जरूरत पड़ती है, या तो एकदम जो बर्थ होते हैं बच्चे वो, या एक मिडिल स्टेज, मतलब कि बच्चों को कहाँ क्या कराना है, अब स्कूलिंग भी हो गई, अब उसके बाद तो वो पेरेंट्स उनको गाइड कर सके। जैसे अभी जयपुर से जोधपुर से एक पेरेंट का कॉल आया इंस्टाग्राम के थ्रू, नंबर ट्रेस करके मेरा, कि अभी उसको 1 महीने का बच्चा है, और अभी रिसेंटली 10 दिन पहले उसे पता चला कि उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, एंड शी वांट्स टू क्राई ओनली। सो मैम, इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको इस समय हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है, तो वो चीज के लिए हमें करना पड़ेगा। और दूसरा, अभी जो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करते, तो आप प्लीज भूल जाओ, अगर आपने अपने हस्बैंड को याद रखोगे तो आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाओगे। राइट नाउ योर बच्चा इज योर प्रायोरिटी, और आप ये सोच रहे हो कि आप उसको लेके नहीं जा सकते, तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन आप जब लेके निकलोगे ना, अपने आप सब चीज होती चली जाएंगी। व्हेन यू बिकम पॉजिटिव। लास्ट 1 ईयर से मैंने शिखा जाना शुरू कर दिया है, लेकिन जब एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है। प्रियंका, वो होगा चेंज, वो तब होगा व्हेन योर चाइल्ड में, जब आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा ना, अपने आप उसकी पॉजिटिविटी जो, क्योंकि जब वो आप अपनी पॉजिटिविटी अपने बच्चे में जब ट्रांसफर करोगी ना, तो वो एनवायरमेंट ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में। फाइट करा है स्पेशल एजुकेटर के लिए, जबकि मैं उसी स्कूल में वर्किंग हूँ, बट माय हस्बैंड इज देयर। वो कभी नहीं कहते, मैंने टाइम टेबल इंचार्ज से सबसे कि व्हाई यू आर नॉट गिविंग 40 मिनट, मोर देन 40 मिनट। 40 मिनट में तो बच्चा सेटल ही हो पाता है, 15 मिनट में उसके बाद उसको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं वो। स्पेशल एजुकेटर, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, स्पेशल एजुकेटर कहने के लिए होते हैं, बट हेयर यू आर द स्पेशल एजुकेटर फॉर योर चाइल्ड। जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता इस दुनिया में, ये याद रखिएगा। बस इतना अगर आपने कर लिया ना, कोई स्कूल भी काम में नहीं आएगा, कोई टीचर की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने बच्चे को इन एंड आउट अच्छे से जानते हो। लेकिन वही है ना, स्कूल में उस टाइम उस बच्चा क्या करे, क्लास टीचर तो कुछ कराती नहीं है। दिस इज व्हाट हमको पेरेंट्स को गाइड करना है। बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है एक कार्यक्रम मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इतनी खूबसूरत चीज़ हाँ, मैंने पारुल देखी है, मैम, ये मैम, हम सफर है। Parul, let them go on. Beautiful. प्रियंका, यहाँ पर है ना, यही अब आपको क्या करना है, यहीं पे इवॉल्व करना है अपनी ब्रेन को, अपने माइंड को, कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या एक्टिविटी दूं। There is a problem in understanding what is happening. If you speak in Hindi, can somebody summarize what's happening? Okay, in the end you summarize, Parul. बिल्कुल माँ। कि यहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए ना खुद से घर से एक्टिविटी बना के भेज सकते हो, कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपका बच्चा वो एक्टिविटी करे। आई एम डूइंग, उसको फोन करके बात कर ले। 1 minute, there is a suggestion. Yes. जी बोलो। हाँ, ये थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा आपको, मुझे रेखा माँ से कुछ बात बोलना था। जी माँ, बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली ये जो मेरी अभी सिस्टर एक बोलती थी नॉर्थ ईस्ट की जो थी, जो बोलती थी बच्चों के लिए, इस साल जो था 24 में हमने इंडिपेंडेंस डे जो हमारा था, मैंने अपनी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को ये बताया कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इस परेड में, जहाँ पर जो ये फंक्शन होने जा रही है। तो उन्होंने मुझे ये मना किया कि भाई ये बच्चे क्या करेंगे, ये डाउन सिंड्रोम है वगैरह ये। देन आई मेट द डिप्टी कमिश्नर बारामूला जो है IAS ऑफिसर शिल्पा मिग्रा जी, तो मैंने उनको बताया, तो उन्हें बताया नहीं, डेफिनेटली दे विल पार्टिसिपेट। तो हमारे बच्चों ने जो वहां पर कल्चरल प्रोग्राम पेश किया, तो मेरे ख्याल में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए वहां पर, और स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला, और फर्स्ट प्राइज हमने जीता। नंबर 2, इस साल हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमारे बच्चों को स्पॉन्सर किया, और वो स्नो स्कीइंग जो है उनको वहां पर कोचिंग होगी, और दे विल बी द बेस्ट स्कीयर्स। जो उन्होंने बताया, उनके जो देखे उनको उन्होंने बहुत बताया कि ये इनमें से आपको इंटरनेशनल स्कीयर्स भी है वो भी मिलेंगे, या ओलंपिक उसमें भी जा सकते हैं। तो इस साल में हमारा एक बड़ा कैंप हो रहा है हमारी डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए, जिसमें उन्होंने 8 बच्चों को सिलेक्ट किया है, जो फेमस जो रिजॉर्ट है, वर्ल्ड रिजॉर्ट गुलमर्ग में, वो 1 महीने की ट्रेनिंग कर लेंगे, और वहां पर फिर जो टूर्नामेंट है 10 दिन के बाद उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। Excellent. So proud of you. Girls and boys, I mean, all of you have to understand one thing. You keep saying open these helplines. I'm only saying one thing. If we are together
and we know each other well enough. The problem is we have not understood each other enough to ring up and say, I need your help. My point is, if I give the name of somebody and there is a newborn baby, they will have a hesitancy to call. I'll tell you today. There is always a hesitancy unless you have been in the field for a long time. I'll tell you exactly what happens. In Tamil Nadu, there is no problem. In Karnataka, there is absolutely no problem. People know who to call in their own language, they call. Now, if you take Kerala, we have 5 separate groups. We are forming the major association in November, which will become one group, and all the districts have joined together. My question to you is that why is it not difficult in the south? Why has it become difficult? Now, if any new baby is born in Chandigarh, I would give Shivani's number or Gunjan's number. Now, my point is but we have to first nobody looks at helplines. In India, we want voices. When I am crying, I don't want to know who's going to be my helpline, who's the doctor, unless I refer. I'll tell you the truth, what happens. It depends on the referral point. Who is referring me? Who's advising me to go here? So it needs somebody who's already been in the field for a long time, who's understood, and who will be rational. See, my point is suggestions are very easy. But all these suggestions we have tried. If you look at the UDID card or the disability certificate, it's different for every state. Now, where it is possible in some easily, some it is not easy. If you think you're getting a certificate easily in Tamil Nadu, no. So we have to intervene, we have to talk. My point is, all these suggestions, the reason we haven't put it under the umbrella is because every state deals with it separately. And yes, helplines, we will definitely, there is only one helpline on DSFI. Brinda immediately puts it on and connect. The reason we have not made it too many numbers is confusion. If you look at us, we do have association in most of the states and we have people who are supporting you. But I agree with you that we will do this, but still they'll come back to us and say, Rekha Ma, where do I do? Whom do I talk to? The thing is that you have to listen to a voice that is strong enough to advise you, to reach out to you and say, I'm there, I'm coming. So I would have traveled India for 30 years, gone into their houses and sat with them. Now, are you prepared to do that to every person you meet? Yes, you should be. If a baby is born in your state, run to their houses, get into their houses and sit with them. If they call and reach out, do this. And this is what I have done. That is how we created Humsafar. Parul, I honestly tell you, it took me 20 years initially to go from house to house. It wasn't. When we did it in Srinagar, we got the parents from Baramulla. And the ladies who brought these children, it was an eye-opener for us that yes, there are people who have less information than us. So there is no state that we have not invaded. And we have gone in deliberately asking, do you want help? Do you want support? We go there. And we want to do it. We will do it definitely. And we will go everywhere. So yes, anybody else who wants to? Ma'am, just one thing. Sorry, ma'am, one thing. Shikha, for your 2 things that you said, I have to tell you, there are numbers on the website. If you go to contact us, it is there. Every state we've covered, there are numbers from almost every state where we have connects with. So that is there. UDID card is there in legal provisions. We have given the link of the Swavalamban website, which we have already provided. In spite of that, people come and ask us, like Rekha ma'am says, probably because they need a voice. So as far as the helpline, third for each of the various these things is concerned, as in helpline, that single helpline. As of now, that single helpline is my number, which anyway I keep passing on. As you all know, the single helpline is my number and the email ID is the info ID. Again, as many of you would have received mails from us where I would have CC'd you saying that this parent from this place wants your support. So as of now, it's been working this way. So all the information that you've asked for is available on the website. But yes, what we can try and do is make it more obvious. So that probably we can do. But other than that, yes, all this information is available. Thank you. I'm sorry, Deepti, this side, can I add something? You can add a lot of things, Deepti, waiting for your adding.
Ma, I wanted to add that I think for this type of help for new parents, we need to tap the pediatricians and gynecologists. We can also tap the radiologists, geneticists. Everywhere, our Sorry, information teacher, should be sorry to available. interrupt. As soon as a Teacher, baby sorry. is born, they should be referring the parents to us. We have done this in Delhi. We have connected a lot of pediatricians. We have been part of pedicons. We have been meeting pediatricians on and off. We are doing a lot, one health camp every year with IAP. So this is helping us connecting with people a lot, and people are able to connect with us back as and when required. So, Deepti, what I am saying is state-wise, we'll have to do it. We need for the state heads to be a little more proactive and Right. start doing more, going out to the hospitals, finding hospitals. We'll try to identify that. But I think it needs a more proactive team in a particular state. Because if you look at Karnataka, you look at Kerala, you look at Tamil Nadu, you look at any of the southern states, they are very well versed with their doctors. And sometimes when you go to a pediatrician, you're very happy with the pediatrician. You don't want to change your pediatrician and go to a general person. So I think we should not interfere sometimes. But if there are referrals, we will definitely give them to those who ask for the support. So I Ma'am, think, yeah. Sorry, ma'am, we have the numbers of the doctors to whom you need to connect with, who are all the federation doctors. All of their numbers are available on their website, whom you can connect with. Yeah, but Brinda, the doctors might not be available when I need them. Okay. So an answer to a particular question will have to be just not 5 or 6 doctors. It will have to be state-wise, because sometimes language is an issue. Like now you can see, I think from Sri Lanka, the Lakmali is having a problem understanding. My point is we have to break it down so that language and anything else that is related with that particular state is given to them as a package. These packages are very important. Like I was telling Solidarity, whatever they're doing should come as a package, as a medical package, an intervention package in a booklet which is in their languages. And that is absolutely crucial. Of course, if you understand English, fantastic. But a lot of people ask for us in the local languages. So I think that's a very, very proactive meeting we have had. You guys have been. So Bhagyashree, can you tell us what we did in Orissa? यस माँ, नमस्ते माँ। नमस्ते। राव, ये तो ओडिशा में जो किया था मैम, आप लोग ने जो आए तो इंटरप्रेटर रख के माने जितने भी पेरेंट्स आए थे वो बहुत ही खुश होके गए थे और बहुत ही अच्छा हुआ था कॉन्फ्रेंस। और जो मैं यहाँ के पेरेंट्स जितने भी माने अवेयरनेस कम था, सबके ऊपर अभी एक होप सा आ गया है कि हाँ हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, हम लोग भी आगे जाएंगे। बहुत अभी अवेयरनेस आ गया हमें। So what we did was we made two different trips. The first trip we meant just Brinda and I go and survey. We survey the scene. We look at the number of children with the parents. Then we realize what they need. So then we take the entire team, which is including intervention in medical and therapeutic. So we also took the school teacher, the special educators, and gave them packages, which we will repeat every year. So it is like, I think the parents were so happy talking. It's not about what we are giving them. It's about having somebody who understands them, because we are also parents. So they were able to meet the doctors. They were able to discuss things. It was an amazing trip in Rourkela. And thank you, Bhagyashree. Thank you so much for all that. You know, you need to ask. If you need the support, call us. We will be there with you. अभी देख रही हूँ कि जितने भी पेरेंट्स का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग अभी सामने आके थोड़ा पूछ रहे कि यहाँ पर स्कूल में ये हो गया, क्या कर सकते, अब ये हो गया, ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा उनका भरोसा किया कि हाँ someone is there, तो माने हमारे लिए करने के लिए। And I tell you one thing, the person who got most empowered was Bhagyashree, because she's now put her son into everything, and you should see him. Subhranshu is one of the strongest self-advocates that I've seen. वो जो सीखा बोली ना मैं,
कोई थेरापिस्ट का किसी का, जब शुभ्रांशु छोटा था ना कोई थेरापिस्ट था ना कुछ भी था। और जैसे बोली कि स्पेशल एजुकेटर के लिए मैंने जब DSFI से जुड़ने के बाद कैसे करना है क्या करना है, जो छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स देखा, उसी के वजह से शायद देखिए वो अभी 20 इयर्स का हो गया है, लेकिन वो फर्स्ट एग्जाम उसका NIOS का उसने अभी दिया, वो जो मैंने आपको मैंने वीडियो भेजा था, और शी वाज सो हैप्पी। अभी वो टीचर्स डे में आके मुझे बोल रहे हैं कि माँ तुम मेरी टीचर हो, तुम भी मेरी टीचर हो ना, तुमको गिफ्ट देना है। How sweet. ये बड़ा लॉजिकल बच्चा है। थिंकिंग है, और इस तरह की सोच के लिए ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, जैसे शुभ्रांशु ने कहा कि आप भी मेरी टीचर हैं और मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा टीचर्स डे पे, तो यहाँ तक इस तरीके से चीजों को सोचना ये एक बड़ी बात होती है, जिस तक हमारे सेल्फ एडवोकेट इन सब चीजों के सहारे जाते हैं और जा सकते हैं और इससे बहुत आगे जा सकते हैं। आज की मीटिंग में हमने देखा कि हमारी कॉन्फ्रेंसेस में आके पेरेंट्स को कैसा अच्छा लगा है, और बहुत सारे हमें सजेशंस भी मिले हैं। हम इन पर काम करेंगे जरूर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने अपने सजेशंस दिए, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। एक मैसेज है चैट बॉक्स में श्रीधर जी का, जो वो जानना चाहते हैं कि कैन आई हैव द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ अ practicing behavioral therapist. I would like to consult to effect some modifications in my daughter's behavior. I stay in Bangalore. बैंगलोर में उषा मैनन मैम है हमारी, है ना मैम? रेखा मैम, तेजल है, तेजल भी हैं, और बिहेवियर इन्हें कोई थेरेपिस्ट चाहिए तो वो उषा मैनन Ask भी them to है। contact तेजल us से आप immediately. बात कर सकते हैं, तेजल जी आपको बता देंगी वहां पे, और तेजल से, हो सकते हैं। So you'll find Tejal's number on the website. I'm sure you can connect with her through that itself. So जी जी जी। in Karnataka, under Karnataka. तो आज का सेशन हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमने आज ये भी देखा है कि किस तरह शिखा जो है दूसरी एक मदर को किस तरह हेल्प कर रही थी। तो हम चाहेंगे, मैं रेखा माँ से बात करूंगी और हम जल्दी एक ऐसा सेशन भी शेड्यूल करेंगे जिसमें आप लोग खुद ही अपनी प्रॉब्लम सामने रखें, और आप लोग खुद ही, आप में से कोई आके शेयर करे। रेखा माँ वहाँ होंगी ऊपर से सुपरवाइज करने के लिए, लेकिन आपकी जो अपने आप सीखी हुई प्रॉब्लम्स है वो हमने देखा, क्योंकि प्रियंका आज आप जहाँ खुद को पाती हैं, आज हम जहाँ आपको लगता है कि आप हैं, हमें मालूम है आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, आप नहीं कर पा रही हैं। हमने उस जगह पे शिखा को भी देखा था किसी दिन, और आज आप देखिए कि पारुल, हम वहीं पर थे, हम खुद वहीं पर थे। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई किसी की फैमिली, हर किसी की फैमिली सपोर्ट कर रही हो, हर किसी के हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग रुक रहे हो ऐसा भी नहीं है। जहां जो हमें मिलेगा, फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, हस्बैंड नेबर सपोर्ट करेंगे, नेबर रिलेटिव सपोर्ट करेंगे, रिलेटिव कोई भी हो आ जाओ, हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। तो कोई एक ऐसा हमें नहीं बनाना है कि हमें इसी से हेल्प लेनी है, जहां से भी मिले हमें अपने बच्चों के साथ आगे निकल। रियली रियली थैंक जी यू। पारुल मैम, रेखा माँ, हेलो एवरीवन। मुझे बस 1 मिनट के लिए आप लोगों से कुछ बातें करनी है। जी नेहा, बोलो जी नेहा, जी। बोलो नेहा। I'm unable to on my video actually. I don't know why. जी जी। Don't Actually worry, मुझे I know your face very clearly. Tell me नेहा, बोल। हाँ माँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका और अनिल सर, दोनों लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। सीरियसली, इवन माय बेबी वाज बोर्न राइट नाउ, ही इज 13.5 months old। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बहुत टेंशन में थी। जब मैं कांटेक्ट में आई आपके, मुझे इतना मतलब लाइक आई कैन टेल लाइक सेकेंड मदर ऑफ मी। मतलब मुझे इतना प्यार मिला, इतना गाइडेंस मिला, इसलिए मुझे अभी भी मिलता है। आई कैन कनेक्ट दैट डे जब आपने मुझे कॉल किया था अपनी साइड से और आपने मुझे सजेस्ट किया था। देन आपने मुझे कांटेक्ट भी कराया था जो फिजियोथेरेपिस्ट है वहां से, तो मैं उनका फॉलो अप कर रही हूँ। स्टिल माय बेबी इज डूइंग वेरी वेल। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है मेरे बेबी से। आपने मतलब मैं दिल्ली गई थी तो वहां पे भी मैं थोड़ी सी हुई थी परेशान जब वहां पे उन्होंने कुछ रेटिंग वगैरह की थी IQs की। बट राइट नो लाइक जैसे मेरा बेबी माइलस्टोन गेन कर रहा है, वो सारी चीजें अचीव कर रहा है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच टू यू माँ एंड ऑल द टीम। लाइक जो भी आप सेशंस कराते हो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक वी आर, हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, आई कांट एक्सप्लेन। लाइक मेरी इनर फीलिंग क्या है इसके लिए।
तो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। हाँ, मैं इस बार का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई, ये इसका थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसको थोड़ा सा डायरिया हो गया था। बट नेक्स्ट ईयर आई डेफिनेटली कम एंड आई ऑल्सो कंट्रीब्यूट। मैंने वृंदा मैम से भी बात की है इसके रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए नेहा, बहुत अच्छा लगा आपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। मैम इतना क्यूट है ना मेरा बच्चा, मैं क्या बताऊं, मुझे मतलब इतना ज्यादा ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो भी नॉर्मल बच्चे से बात ही मत करो, ये वर्ड नॉर्मल मत यूज करो, हमारे बच्चे उससे भी ऊपर हैं। नॉर्मल से भी ऊपर है, नॉर्मल मत मैं वही कह रही थी मैंने उनसे भी बोला ज्यादा। था, मैंने एक बार तेरे से एक बार, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ, मतलब जो चीजें, मतलब आई हैव, मेरी सिस्टर का भी बेबी है, जो चीजें मैं उसे 2 बार समझाती हूँ शायद वो नहीं करती है, बट मेरा बच्चा उस चीज को तुरंत फॉलो करता है। तो आई एम सो हैप्पी कि ये इतना ओबीडियंट अभी से है। बिल्कुल तेरे पे गया है यार। माँ एग्जैक्टली योर वर्ड्स आर 101% ट्रू। हमारे बच्चे बहुत हमारे सारे पे लोग जाते नहीं जानते मेरी बेटी समाया को कि शी इज डाउन सिंड्रोम। इस एरिया में बहुत कम अवेयरनेस है, लेकिन जो सब एजुकेटेड है उनको पता है। तो मेरे एक नेवर है, नेवर क्या, मेरे कलीग हैं, जस्ट लाइक माय ब्रदर। तो उनको वो अभी भी उनको पता है कि शी इज डीएस, बट वो नहीं मानते, कहते शी इज हाईली इंटेलिजेंट। और कोई भी उसको देखता है, उसकी एक्टिविटी स्कूल में जैसे करती है या घर में पिछले 5-6 साल से जो लोग बहुत मियाँ सब कहते हैं ये जानबूझ के नहीं बोल रही है, इसका दिमाग बहुत चलता है। हम जहाँ सोच हमारी खत्म होती है वहीं समाया की सोच शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही रियली हो मैम सकता है। इंटेलिजेंट। पारुल, नेक्स्ट टाइम तुम बाहर जाते हो ना, तेरा कोलीग को ले जा यार, कहीं पर भी जा रहे हो साथ में, वो पीछे पीछे देखो दौड़ेगा। रेखा माँ का हाँ, दिमाग वही मेरा चलता है, आइडिया प्रॉब्लम देख। सॉल्विंग पे चलता है। रियली माँ, रियली ही इज ए पीजीटी है ना, कॉमर्स एजुकेटेड पर्सन हाँ, फ्रॉम बस हो बिरला गया यार, तेरा नैनीताल। काम ही हो गया है ना, तेरा हाँ, तो आंखें कंपेरिजन। मिल गई। बस बस हम अब ऐसे ही लिंक कर देते हैं सबको, ठीक है। हाय गॉड ब्लेस यू। रेखा मैम, यस, हाँ बोलो बोलो। नमस्कार। 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 हाय पारुल। जी मैं बहुत अच्छा डिस्कशन है, हम लोग का तो एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे लग लेकिन रहा है हमारा कि हम प्रमोशन भी 20 मिनट माँ से पहुंच चुके हैं। माँ रेखा से माँ प्रमोशन जानते हैं होता कोई है, जाना नहीं चाहता है। माँ से प्रमोशन हो जाता है ना, टीचर, सहेली, फ्रेंड। और हम जो अभी अभी हम शुरू कर रहे, माने अभी 8-10 साल हुआ है जो हम एक का वो हो गए हैं ना, पूरा स्ट्रेंथ बन गए हैं। लगता है हमारा व्हाट हैपेंड आफ्टर अस, हमारा ग्रुप है, हमारे बाद हमारा ग्रुप है, ये तो सोच में आया ना। इसीलिए मेरा मिस्टर भी स्टील प्लांट में काम करते करते मैं जहां जाती थी रश्मि को लेती थी, लेकिन अभी ये पूरा आ गया है जब मैं भी चलूं। देखो कितना आगे अभी आ गए हम थे लोग आ गए हैं। कॉन्फ्रेंस पे, कॉन्फ्रेंस में आए थे, बहुत बार नहीं हाँ, आए, इस बार आ गए थे। जयपुर गए थे, फिर अभी सेकंड कलकत्ता भी आ गए हैं। माने वो अपने आप खींच के आ जाते हैं। और हमारे बच्चे जो भाई बहन सिबलिंग है, वो भी बोलते पापा आप भी जाओ। मतलब पूरा हम फैमिली भी सपोर्ट होता है, और हम भी, हम जो डीएसएफ है, पूरा स्ट्रेंथ है, ये तो मेरे लिए पूरा सपोर्ट है, और कुछ नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे सही लिए कह रहे और हैं आप स्ट्रेंथ क्या, बना है। हमारे अपनी परिवार भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जब कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। दोस्तों समय जो है समाप्त हो रहा है, और हमें आप सभी के समय का जो है ध्यान रखते हुए और सम्मान करते हुए इस सेशन को तो यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आगे आप जुड़े रहिए हमसे, रेखा माँ से। जाते जाते हेमलता मैम, मैं जानती हूँ आपने हैंड रेज किया था, हम आपकी बात सुनकर जाएंगे। ये आखिर का 1 मिनट आपका, उसके बाद हम सेशन समाप्त करेंगे। जी मैम। नहीं, मैंने सोचा चलो हम तो सीनियर हो गए हैं तो छोड़ दो इनको, तो बिल्कुल बच्चों नहीं के छोड़ेंगे, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जी बताएं। नहीं, मैं तो कलकत्ता नहीं आने की तो बहुत प्लान किए, सब किए, कुछ ऐसे ही मेरा ही हेल्थ इश्यू में मैं नहीं आ पाए। जी लेकिन अभी ना ये क्या, अपना तो बच्चों के लिए तो ये जो कुछ भी है हेल्प वगैरह अच्छा है। एक उम्र, अभी देखो अनु का भी 40 के ऊपर होने के बाद कहीं कहीं पे उसको ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में या कहीं भी, और ले जाना स्कूल में भी तो नहीं है आजकल। वो प्ले होम में, मतलब यहाँ का क्लाइमेट, रोड का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इनका भी हेल्थ इश्यूज से हम उसको ना उधर भी नहीं ले, वो वर्क करती थी ना, आजकल वो भी नहीं, जी अभी सिर्फ जी सोचेंगे। जी ऐसा हो कि ना उनका फ्यूचर के बारे में ना, हम तो इतने दिन दिमाग अलग ही था कि चलो हमारे बाद हमारे सिबलिंग, हमारे बच्चे जो हैं वो देख लेंगे।
लेकिन वो तो देखेंगे। उसके बाद आजकल शुक्र है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन अडॉप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए हम बहुत ट्राई करके बार बार उनके पास जाते हैं, वो जो मांगने उनका सेवा बहुत करते हैं। फिर भी उसको ना, अनु को खास करके मेरी ग्रैंड डॉटर अनु, तो वो अपनी दीदी के पास रहना चाहती है, तो उसका ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि उसको साथ में कोई तो सोना पड़ता है, मतलब नया जगह हो जाता है। तो वो ग्रैंड डॉटर को हम कह रहे हैं कि तू तेरा रूम में ना है सेपरेट रूम वगैरह, तू जाके इसके साथ एक दोनों बेड सेपरेट कर देंगे, वो भी सोएगी। तो वो नहीं लेना चाहती है उसके, मैंने क्यों हमें अभी अपने उसका आप हो ना, आप ही कर लो, क्यों लाना चाहते हो, क्यों हमारे ऊपर डालना चाहते हो कुछ। लेकिन जरूर नहीं करते, लेकिन हमेशा वो अवॉइड करने लगे हैं। तो बच्चों के वो थोड़ा मुझे ज्यादा डिप्रेशन में ले जा रहा है। अरे बाप रे, मेरे से भी ये बहुत सोचते हैं कि हमारे बाद उसको क्या करना है, कहाँ से। तो उसको इंक्लूड उसके घर में ही रखना है। दीदी के पास जाना चाहती है, तो दीदी का भी जॉइंट फैमिली है, स्कूल भी है, उनका हॉस्टल भी है। तो थोड़ा हेमा, सा let me 1 minute, let me interfere. आप ना अपने फैमिली पे बहुत बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, ये वो मत नहीं चाहते, मैं नहीं, नहीं आप मत डालना करो, नहीं चाहती। नहीं, आप करो ही मत, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दिस। मैं ये आप नहीं करना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, नहीं मुझे नहीं, उसका आप रहो ना लेना रहो, नो नो, उसका नहीं, it is not, you have to explain to them. My son is there, he is in Scotland, but that doesn't mean that Bubbly can go and stay with them. No, Bubbly, I am there, I will look after her. You need to put her separately, you need to give her a room, Yeah, you need to that get I'm arguing with my husband. 1 There minute, is 1 minute, 1 more minute, 1 thing. minute. You please call me. I will talk to you because this is not Okay. the way. Yeah, We have, if you have 3-4 children, their lives are theirs. Our Yes. lives are ours. Yeah, that's what I'm telling. Anupama is your child and your responsibility. Bubbly is my responsibility. Bubbly cannot become her Yes. brother's responsibility. So Yes. yes, call me and I will tell you how to solve this issue also. You talk to Sumant only because they, yeah, I will call you and I will talk to you. Talk I to will me. I'll explain it. speak to Yes, both of you. definitely. I Okay, think don't you worry are about it. also not at home or in the No, India. you call I me. think You you call are me away. whenever you are free. Please Okay, call okay, me. I I will. will listen to I you. will make it. Okay? Yeah. Okay. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. थैंक Thank यू you. हेमलता मैम। और जैसा कि हेमलता मैम ने बताया कि उन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो उनकी बेटी चाहती है और वो भी चाहती हैं कि अनु उनके साथ सेट होना शुरू करे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे बाद क्या होगा। और वहां वो अपनी बहन को रखना चाहती हैं, लेकिन उनकी बहन की बेटी या बच्चे उतना नहीं उनके साथ चेंज हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें, ये भी एक तरह का वो है। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम साथ मिलके कर सकते हैं। रेखा माँ। Yes, Yes. I think there are solutions for. See, the thing is, you're looking at the problem. The problem is not what you look at. You look at a solution. So in my life, I've always looked and searched for solutions. If you know the solution, there is no problem. The problem is you got to apply yourself. You call yourself normal people, na? Aap normal ho na? Think practically. My point is, our children think more practically than us. They actually are so rational in their thinking. The problem is we create confusion in our own minds. Why should Hemalata go into depression now? The problem is you're always thinking of something that you should have not think about. You should have created a community. By now, you should have a lot of caregivers. Like I create a lot of caregivers, so I don't have to worry at all. If you look at when I come for the conference, Bubbly is accompanied by 4-5 people because it's important. She needs her friends. She doesn't need me all the time. The problem is we think we have to be there. Why do you have to be there? Your child finds their own companions, give them. That is why we created Humsafar. Humsafar is for us to give them a companion who they can talk to on the phone. They can spend hours talking to them. My daughter's on the phone all the time. She's already connected. You're not giving them that opportunity. Let's move on. Today is Vijay Dasmi.
leave behind all the things that we don't want to think about, and let's move ahead in the interest of our children, in our families, and about ourselves. Think of yourself first. You are the most important person in all of this. Unless, like Parul always says, love yourself to love the world. Yes, Parul. अच्छा, मैं इसे ऐसा कहती हूँ, ये भी मुझे आप ही ने बता दिया। ये सेइंग अब मेरी तरफ से हो गई, रेखा माँ ने बना दी मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया रेखा माँ। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आप दशहरा मनाइए, विजयदशमी मनाइए, बहुत 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 खुश रहिए, अपने आप को प्यार करिए। लव यू ऑल। नेक्स्ट टाइम इस तरफ का एक मीटिंग बनाइए। नेक्स्ट होगा टाइम ये भी होता ही रहेगा। जहाँ पे टेंशन आप रिलीज कर लो, और ठीक है? कुछ टिप्स मिल जाएगा हम लोग के। लव ठीक यू, है, थैंक यू। लव यू शुभांगिनी, लव यू, बाय रेखा माँ, आपको मीटिंग एंड करना होगा। बाय 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 Hi, Parul aunty. बाय करो Parul aunty. She wants to be as a Parul or friends only. यस यस, No, aunty, कुछ no. पारुली बोलो। ಯಾರು? ತುಷಾರ್ ಜೋಶಿ ಅವ ಬಾಳ ಏಕಿ ಜೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್. यस फ्रेंड्स, प्लीज एग्जिट कर लीजिए आप लोग। ये राइट हैंड साइड पे एंड लिखा होगा हेमलता मैम, वहां एंड कर दीजिए, उसे क्लिक कर दीजिए राइट हैंड साइड पे नीचे।